आवाज आ रही है ना? सो गाइस, कल बोला था याद है तुम लोगों को ये मैं नया एक ये है। होल्ड ऑन सर, ये बदल कैसे क्या? हाँ नहीं नहीं, वर्टेक्स का ही कल का ही कर दिया था ना मैंने। अरे भूल गया मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। वर्टेक्स का कल ही हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे इसके कैरेक्टर को अपग्रेडेशन के लिए मुझे वहां पर जाना पड़ा। तो मैं यहाँ पर पहले से ही वो मैप में दिखाया था, याद है तुम लोगों को? मैं कल इस तरफ था, यानी कि मतलब यहाँ नीचे यहाँ पर था मैं एक्चुअली। तो वहां से मैं सीधा क्या किया, जंप मार के इधर आ गया, सीधा टेलीपोर्ट करके पूरा सेटअप कर दिया है। मतलब पहले से ही आके बैठा, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। तो वापस गेंशिन इम्पैक्ट में आप लोगों के लिए देख रहा पड़ेगा क्या 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 94। चलो भाई, उड़ते हुए जाएंगे। आज तो सारे सुपर हीरोज बन जाऊंगा भाई मैं। आज देखो यार, उड़ते हुए जाएंगे और कैप्टन सुपरमैन सब बन के आके उसके मारेंगे। अल्लाह, आज हाँ भाई, आज जगह सुपर हीरो का टाइम आ जाएगा। I क्यों heard भी? that Salterai was once the home of the god of Salt's people. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. बस हो गया तेरा, तू बैठा बस। तो यार जोंगली आया है यार, सही में जोंगली वापस आ गया है भाई। थैंक यू भाई, तू वापस आने के लिए। आई लव यू यार, सही में मुझे बहुत। According to legend, the people of the god of salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. वो But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Oh, good. That's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of salt, which is actually how the area originally got its name of Salterai. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of salt. तो गाइस, मैं पहले बता देता हूँ, मेरे घर की खिड़की जो है वो खुली हुई है। गर्मी का मौसम है भाई, इसलिए तो बाहर की शोर शराबा आप लोगों को सुनाई दे सकता है। तो कृपया करके उसको इग्नोर मारिए, और अगर ज्यादा हुआ तो अपने दिल पे पत्थर रख लीजिए, बस ये सुनिए। गेम का मतलब गेम का, ठीक है? I don't know. There's no concrete evidence. But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. यानी कि मतलब कि मैंने यहाँ पर ये टाइप किया कि शायद ये रिफ्लेक्स वो ड्रैगन जो था उसको ऊपर रिलेटेड करता है क्या बोल के, उस वजह से मैंने यहाँ पर वो टाइप किया है। और हाँ, एक और बात, अभी जो भी मिशन होंगे वो सारे के सारे आप लोगों के सामने ही होगा। मॉन्स्टर को मारने के अलावा सब चीजें जो है वो मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा मॉन्स्टर को मारने वाली, क्योंकि मैं जो है वो मॉन्स्टर को अपग्रेडेशन के लिए कर दूंगा, और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सिर्फ मिशन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं मिशन करूंगा। ओके। The god of salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. यार ये मोरेक्स हर टाइम पे विलन क्यों बन जाता है यार? ये साला सबसे बड़ा विलन मोरेक्स है क्या? मुझे पता नहीं है। Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Ugh. Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. What? अबे खुद गॉड ऑफ जियो यहाँ पर खड़ा है, और तू बोल रही है कि इसको पता नहीं है? अबे जियो इधर सामने खड़ा है तो साला सब सारे सील तोड़ देगा वो 2 सेकंड में, ऐसे चुटकी बजाते ही। I may know something about it.
हाँ, What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals. हाय 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 कितना बड़ा झूठा है देख भाई जॉकी भाई ये प्यारा झूठ है यार ये प्यारा झूठ है कि मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है और कई तरीके से रूमर्स आए हैं कितना कितना मासूम बिहेव कर रहा है भाई जंगली भाई क्या बात है भाई क्या बात है उसको फिदा हो गया भाई Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. ठीक है अब किधर जाने वाले ए फिर से मत भगा बोल रहा हूँ मीटर 100 मीटर की फिर से भगा चलो टेलीपोर्टेशन का यूज कर किस्मत जब इतना अच्छा हो वो देखो आप लोगों को दिख रहा है ये मतलब ये बर्फ वाला ऐसा लग रहा है जैसे ये बर्फ में जम गया आई मीन जम गया साढ़े चढ़े Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Another? This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this? When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. मतलब कि ये लड़की और ये जोंगली के अलावा ये एक नंबर का घोचू है पीछे ठहरा हुआ साला कल कुछ नहीं आता इसको That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. Liyue is vast, yet even one haven is hard to find. तो यहाँ पर चार दिशाओं में चार बड़े हुए हैं यानी कि मतलब कि पहले साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ यानी कि मतलब कि साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसे पैटर्न के हिसाब से मुझे सेट करना है मुझे नहीं पता किसमें साउथ कौन सा है साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard this saying before. Certainly you have. And the contents of this saying are also related to the god of salt. To provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War, this benevolent god searched all across Liyue. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even one sliver of peace was a luxury. And that haven she eventually found is right here. Today, it is known as Sal Turai. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that ruin. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle. पहले उन बच्चों को जरा समझ Let me lead the way from here. With the wind!
तो टपक गए। अभी करना क्या है मुझे? ऊपर बताओ। ओ ये चाहिए था मुझे। Is this an answer from this world? तो इसमें अभी देखते हैं, ये नॉर्थ वाला है। क्या बोला था? साउथ क्या था ये? मैं भूल गया। Better than nothing. क्या था वो? पैटर्न क्या था? मैं भूल ही गया इन बच्चों के पिक्चर में। देखिए क्या होता है। ऐसे भी लाइव है ना? साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट था या फिर नहीं, आखिर में नॉर्थ आता ना। पैटर्न के दिख गए सही में यार, ये कंफ्यूज हो गया। साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो यानी कि मतलब कि ये साउथ वाला है और इसके लिए जादू वाली चाहिए। चलो फिर जादू इधर पार्टी मुझे सारा को लेके चलो। साउथ वो नॉर्थ वाला है। राइट साइड यही है सर। लगा मेरी सही तो फिर गया ये तो होना था। होल्ड ऑन अ सेकंड। आर यू सीरियस? नॉर्थ वाला मैंने एक्टिवेट कर दिया। Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Jingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. South, east, west, and last one the north. There is one. हाँ तो सेकंड के लिए रुक जा, मुझे पार्टी चेंज करना है। चलो ठीक है। It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. Don't get frostbite. कैसे करता था? एक कैरेक्टर था जो वाले था ना, और थोड़ा आगे कर लिया, मतलब वो तलवार से ही। अरे हाँ वो याद है, बर्फीला वाला दूसरा कैरेक्टर था। वहां पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे झगड़ना पड़ेगा ना, तो इस तरह ये पानी के ऊपर आ सकता है। इसी तरह मैं वहां पर गया था। समझ गए होगे तुम लोग कि मैं इतना ऊट पड़ा मौसम में। आगे इसके लिए देखो बीच Freeze! अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं जमीन तक आप बर्फ बनाऊंगा। मजा क्या लगेगा? और इसकी जगह खतरनाक होता भी रात तक से दिला सकता है। Freeze! Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Guyonstone Forest. Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim.
To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Hey! Don't pass an opportunity like this up so easily! I don't agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. Are you serious? I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as traps. नहीं जोंगी भाई, आप साथ ही रहो। हमको कुछ ट्रेजर वेजर नहीं चाहिए, हमको ट्रेजर बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम ना साथ ही रहो भाई। You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. I can accept this arrangement. Well then, let's go. अभी क्या करना है? अंदर घुसना है? भाई माफ कर दे भाई, मेरे को कूदना नहीं आता और ना ही तैरना आता है। आगे घुसना। धुआं था? Are you serious? मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। Wow, this is so good man. ये तो हम करे अगर जोंगी का कैरेक्टर मेरे पास होता ना, सबसे भाई मचा देता। ये डर जाएंगे। मम्मी ये रोको मारते हैं। Wind blade. Verdict is. Disappear. Wind blade. सारे प्रॉब्लम अरे इसी से मार आओ आओ ब्रदर क्या मैं अंडरस्टैंड किया ये जरूरी होते हैं, ऐसे चीजें होते हैं ना, ऐसा फूल वगैरह ये जरूरी होते हैं। कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं। मेरे को फूल को लेना देखो, जैसे मैंने देखा बहुत इम्पोर्टेंट होते। कभी कभार ना वो ऐसा कभी मत बोलना, ठीक है? सोचा कि कंट्रोलर का यूज करती है पूरा एडवेंचर पूरा का पूरा ना नहीं आ जाए। Dodge this. आगे बच्चे खराब है। Freeze. Are you serious? Dodge this. Cool it. हाँ? डेरिवेट कैसे हुआ? ऑटो अटैक। Freeze. एक मछली के चक्कर में। पानी में रहकर ही करना। Cool it. क्या मेरे को टक्कर मार गया? Dodge this.
और सही में यार यहाँ तो ट्रेजर के अलावा सब लोग पूरा ट्रेजर, मगर मुझे थोड़ा कलेक्शन Cool it! और मुझे खास करके ये चीजें कलेक्ट है, अब मतलब कलेक्ट कर अब Yeah! ये स्नैपड्रैगन असल में कौन से कैरेक्टर के लिए आता है वो मैं भूल गया। अभी क्या बात है? मैं किसको देख रहा? हाँ वो रहा, अरे वो गोल्डन वाला, इसको काहे छोड़ दे रहे बाबा मुझे, चलो जल्दी। ओह माय गॉड, ये कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ इसका एक वजह है। क्यों? Better than nothing. मुझे दिखा भी नहीं, कमाल है यार। चलो कोई बात नहीं, चलो जाना क्या है। क्या इसमें स्टोन एलिमेंट चाहिए और स्टोन एलिमेंट मेरा उतना पावरफुल मतलब मुझे इसको पावरफुल बनाना पड़ेगा। इसको छोड़ूं, काया को छोड़ूं, काया को छोड़ देना। वो ओके सॉरी काया भाई, आप कमजोर हो थोड़ी देर के लिए। Oh, how it... ज्यादा मत चल, ठीक है। मतलब कि अटैक के लिए जो है वो ड्यूलुक और आर यू सीरियस भाई, जब ये आने वाला है तो पहले नहीं बता सकते थे। एक मिनट, मुझे ये पहले पता होना चाहिए था यार, अभी जंगली भाई आ रहे हैं मेरे पास। ओ भाई सही में, सही में यार जोंग तो बाहर है। अरे जोंगली भाई अपने पास है तो पहले बोलना चाहिए ना, तो मैं इसको लेता ही नहीं मैं। This will be interesting. हाँ इंटरेस्टिंग है, चल अभी इंटरेस्टिंग का, इंटरेस्टिंग का पप्पा है। जंगली भाई अपने हाथ में आ रहा है यार, उसका एक्सपीरियंस अलग ही लेवल पे होगा। ठीक है Are these statues? No. These are people. Ugh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Burn! पहले बता देता हूँ कि मैं जंगली कैरेक्टर को ना तभी यूज कैसे इसे कैसे अनलॉक करूँ।
जो हर टाइम पे जाऊंगी थी मतलब अरे गलत जगह रख दिया रे वो अबे गलत Solidify! क्या खाऊं मैं समझ ही नहीं Rise! यार लोग कैसे हो अरे ये कैसे हो कैसे हो Look at this! It's filled halfway with salt. Just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this is mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Hey! How can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? इसका गंदा कटने वाला है मैं बोल रहा हूँ गंदा कटने वाला है इसका मैं बोल रहा हूँ मेरा अगला वाला इससे भी बेहतरीन वाला खजाना या कुछ होगा जिसकी वजह से आर्कोलॉजी वाली का तो पूरा किस्सा हो जाएगा और इसका पूरा पोपट हो जाएगा. Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Then let's move on, shall we? Yeah, of course. अरे जल्दी आ तो वापस आ जाए. What? Oh, so sorry. Windblade! Retribution! हैं?
दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा भैया को Rise! यस ट्रांजिशन एकदम परफेक्ट जम रहा है वाओ Just a simple ruler. Doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. मतलब कि जैसे ही वो जमीन पे रखेगा तो पूरा का पूरा साल्ट यानी कि मतलब नमक पूरा सब कुछ हो जाएगा तो यानी कि मतलब कि यार इसका तो किस्मत What? That's even better than the salt chalice. Well बोला था मैंने then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? And this girl has been useless. Why would she get anything? Jelena, very Jelena, Jelena. Oh boy, here we go again. So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. भाई जोंगली को हल्के में ले रहा है सोच रहे हो जोंगली को हल्के में ले रहा है बेटा Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, "Ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock." That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I Will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Pay your dues. quake. Prepare yourself. No escape. Leaving so soon. Order guide you. What? Crumble. Can't run from death. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. Leave this place. Oh, darn you! Just you wait. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Hey, Paimon likes Mora, but Paimon doesn't do bad things. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. When people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the contract? I think we should be honest with each other now. Huh? Be honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge, and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough.
Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Qixing, Yinyuan Hall of the salt industry. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. यहाँ तो कुछ और ही खुलासा हो रहा है. Oh, right! Now that you mention it, the people of Liyue very seldom use the name Morax. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him! But this is Morax's Liyue after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Naturally, of course. But I must add, Liyue is no longer Morax's Liyue. Come with me. All the answers you seek lie ahead. मतलब सामने की तरफ और चीजें है जगह. कौन चीजें लेके? ये बड़ा है. और वहां तक कैसे जा पाएंगे यार? होल्ड ऑन, मुझे कुछ तो यहाँ पर महसूस हो रहा है. Rise! नहीं हो सकता. Quake! यार जंगली तो बड़ा तबाही है यार. आई Rise! सब कुछ हमारे छोटा है तो फिर Solidify! What? ये तीर से बस. Crumble! Wind blade! With the wind! Ha! Ha! Burn! Ha! This is order. Wind blade! Ha! Don't get frostbite. You're toast!
बड़ी परेशानी में Verdict is... Ha! Ha! Windblade! Freeze! Disappear! Rise! Windblade! Order guide you. है क्या वो? है क्या वो? अच्छा वो तो बन गया। वाह, बढ़िया। This is a sword? Aha! It's a broken sword! This is proof! This proves that the god of salt had to fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. एक बात बताऊं, मोरेक्स लड़की है क्या? If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According to the contract, you can only claim one. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes, but the only one object per claim clause still holds true. You cannot take 2 relics at the same time. This logic! Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the god of salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The god of salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. But as punishment, I will tell you the truth. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the god of salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the 7. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Tevat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. No. No! It can't be so. In her last days, she had not even a single blade to defend her people with.
Not even a single blade? Then... this sword... This sword is not a relic belonging to the god of salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the god of salt! यानी कि मतलब कि इसकी पनिशमेंट ये है कि सच्चाई को झेलना नहीं होता है कि इसका कमजोर दिल है, तो इस वजह से वो सच्चाई को झेल नहीं पाएगी, तो वही पनिशमेंट है। सही बोला भाई, जंगली भाई आपसे। As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Hey! Hey! Come back! It is a punishment after all. I did not want to tell her such cruel facts, but the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. मतलब कि इससे भी भयानक सच एक और भी है। और एक चीज मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि जब से मैं गेम खेल रहा हूँ तब से जॉन्गली यानी कि मतलब गॉड ऑफ जियो जो है वो हर चीज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलता है, यानी कि मतलब कि सच्चाई और सही तरीके से होना चाहिए। वो यार भाई ये तो कमाल है यार, ये जॉन्गली भैया तो भाई आप तो कमाल हो यार। ये भाई उससे तो ग्रेट है। अभी कहाँ जाना है? Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt and betrayal. What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. मूर्तियां This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind, but weak god could never protect anyone in wartime. The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. But what about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here, to break the sword, and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. But they need not have done so. For how could a god
who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart. Even if this is so, I can't. This must be a lie. A false history, all of it. Don't you dare try to shake my faith. बेचारी यार, जोंगी भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था. Zhongli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. Indeed. In ages past, Havria's story served as a warning to me as well. Oh. Faith in a god who has already passed will do you no good. So it is for Havria. And so it is for Morax also. The people of you. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyonstone Forest? Huh? Of course. What do you want to do, Zhongli? Treading old ground, telling old stories. One cannot help but be reminded of old acquaintances. लीव कर दे तो उसको डोमिनेशन को. यार सही में, और गॉड ऑफ सॉल्ट तो पूरा का पूरा 1500. ये कहानी अब और कितना आगे जाएगा मुझे नहीं पता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि कुछ तो तबाही मचा देगा. Hold on a sec. उनकी हीलिंग्स कितनी थी? बस सारा हीलिंग्स करना है. चल हीलिंग करके आते हैं. सही में यार, जंगली तो पूरा का पूरा तबाही वाला बंदा है, मगर इतना यार, मतलब इतना फेस फॉरवर्ड भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को दिल टूट जाए. सही में यार, उस लड़की पे यार बेचारी लग रही है यार. मतलब उसका पूरा जिंदगी गॉड ऑफ सॉल्ट को देख उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, मगर उसका तो दिल टूट गया. नहीं नहीं ठीक है. शादी और बात. ये कहाँ तक कुछ देर के लिए स्टैमिना बढ़ा देते हैं.
जंगली भैया Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyan stone forest. The Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. The Salt Chalice and Salt Ruler that she left behind should not return to Liyue. To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. I ended an era with my own two hands. I've always wondered how I should remember that which I ended. History records, but history may be changed. This incident proved that. Time is a mighty force, and history's twist in its flow. I need to find a better way of recording history in order to engrave its truth. Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth, even one such as myself. Someday we may all disappear. यानी कि मतलब कि ये सच को दिखाना चाहता है ताकि सच्चाई जो है वो बाहर आ सके। आर्कोलॉजिकल वे तो नहीं है मगर एकदम मतलब ये बंदा सच को दिखाना चाहता है दुनिया को। सही में यार कॉन्ट्रैक्ट करता है मगर फिर भी सच्चाई पे जीता है अरे बंदा सही में जंगली भाई सही में। Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history is engraved in your memory, it will one day accompany you into another world. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides of Teyvat. So that's why you want us to fight you, so you don't just Sounds like tough work. Now then, it is time that we consigned both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Huh? Why do we need to throw them into the sea? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osial, Overlord of the Vortex, who the Jade Chamber most recently returned to this ocean prison. Oh. Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Guyan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folk tales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria has left behind be yours to subsume. वाह यार कमाल का विजुअल। And thus another spark of divinity departs from Liyue. My legacy shall now be left to those who come after to debate. जोंबी का पावर तो एक अलग ही रेंज पे बैठा है। I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only grow fewer.
We did not measure right and wrong during the days of the Archon War in the same manner as we do today. Of course, as I am now, I only wish that she could have lived in a gentler time. Of course, as I am now, I only wish that she could have lived in a gentler time. ये क्या था? I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only grow fewer. Though the Salt Chalice and Salt Ruler do have power in their own right, they are nothing before Osayo. If a day comes when he should recover his strength and return, I believe that even so, he will be defeated once more. Oh. तो अभी क्या है? सारे मिशन तो कंप्लीट हो गए। कैंसिल। मेरे पास वो कितने हैं वो पत्थर? शायद मेरे पास है भी नहीं। देखा, मेरे पास है ही नहीं। तो अभी करना क्या है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ओह, hold on a sec. मैं ये कर सकता हूँ। और 4 दिन के बाद एक नया इवेंट आने वाला है जिसमें बहुत सारे विशेष होने वाले हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, वहां पर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो भी लाइव। ठीक है, नॉर्मली नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास क्या देखो यार, ना मैं अमीर लौंडा हूँ ना ही कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि मानो कि ये सब चीजें खरीद कर, हाँ तो ये सब चीजें खरीद कर उसको मैं ऐसे नए कपड़े खरीदने के आउटफिट वगैरह ये सब चीजें खरीदने के लिए, मतलब ओरिजिनल वाला ये है जिसके कपड़ा पुराना जमाने का है या फिर चेस्ट की जैसा है, मगर ये पूरा का पूरा गॉड लेवल है। मतलब इसको, अरे हाँ, ये इसका क्या नाम है? A blade embraces its duty, कामिसा as a तो jeweler cherishes their gems. इसके पास कौन सा तलवार है? कची? और इसको तो मैं जानता हूँ जी। ईसा वाह, बारबरा, बारबरा के लिए भी नहीं कपड़े। हाँ यार, पता हो तो पहले ही बारबरा के लिए ले लेता हूँ। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा पसंद तो ये रेड डेड ऑफ नाइट, ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया, और वो भी डीलुक के लिए। और ऊपर से ये स्टाइल भाई, क्या लेना बनने में क्या स्वाद है। काश वो कपड़ा मिल जाता ना तो इसको आउटफिट चेंज करा देता इसका। ग्लाइडर का तो टेंशन है। चलो अभी करते क्या है, देखते चलो यहाँ पर कुछ मिशन वगैरह मिल जाए। वो 9+ तो होगा नहीं क्योंकि उसके लिए मुझे वो चाहिए, और ये मिस्ट्री तो उसका नहीं हो रही है। ओपन द डोर, ये हो नहीं रहा है, और एक्टिवेट द मैकेनिज्म। चलो अंडरग्राउंड देख के आते हैं। ओह, तो इसका मिशन कंटिन्यू हो रहा है। ओह वाह, मुझे पता नहीं था। चलो इसका मिशन कंटिन्यू करते हैं। भयानक लग रहा है।
कैमरा से देखता हूँ कि असल में होता क्या है। कैमरा जरा थोड़ा सा साइड है। ये तो बिल्कुल वो पेड़ वाला टाइप का कुछ है। हाँ, वो तुम्हें याद है बर्फीला वाला पेड़ एक आता है जिसमें लाल वाला रंग होता है, पता नहीं जाना है। असल में करना क्या है? एक्टिवेट द मैकेनिज्म। अब इसको कैसे करें? एक्टिवेट कैसे करें? दूसरी की तरफ घूम के देखो। तो इससे तो समझ नहीं। नहीं, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो एक्टिवेट कैसे करें? This moment will be frozen in time. नहीं, इससे भी कुछ नहीं। नहीं, इससे भी कुछ नहीं है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? Incinerate! इससे भी कुछ नहीं हो रहा। तो फिर इसको करना क्या है? इसका कुछ तो करना है यहाँ पर। हाँ, ठीक है। Ha! Ha! Boba, get them! Time for retribution! ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है। Wind blade! Ha! Verdict is... Ha! तरफ किया।
हमको करते कैसे तुम बताओ, क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओह, ये तो बहुत सारे हैं। चलो क्या जाने दो, इसका कुछ ना कुछ तो कर लूंगा मैं। तो तुझे सारा का ट्राई करके देखो होता क्या है। तुझे सारा वाला मिशन नजूमा। बस ऊपर वाले से दुआ करो कि ये मिशन हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस मिशन के लिए ना बहुत पापड़ बेले हैं। आज ले अटकर बाद में जो होगा वो मेरा शरीर में What's the hurry? तो पछाड़ के रख What's the hurry? दिया। ये बहुत जल्दी भाई। कैसे करूं वही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब आग वाली आती है ना तो उसको हराना इम्पॉसिबल जैसा लग जाता है। एक पानी वाली को भी लेना पड़ेगा, और मेरा जो पानी वाली जो है वो कैरेक्टर जो है वो 21 पे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसे अटैक करना बहुत मुश्किल होगा, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। पानी वाली को लेवल अप करके देखता हूँ। ये 40 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसको कैसे अपग्रेड करूं? क्या होल चलो कर लेते हैं। अब वैसे हाँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ये जो मेरा ट्रैवलर कैरेक्टर है बोलते हुए सुना है मैंने, फर्स्ट टाइम। The way people charge in here as they please, so uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some kind of street market. Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kujusara? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone, not yours, Signora. Then I apologize, Almighty Shogun. I know, you can't get me out of your mind. But you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Ah, so you came to expose my crimes in front of the Shogun? Yeah. I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea what you're talking about. She doesn't take us seriously at all! Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong.
That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, they're just necessary sacrifices. That's all. You stop me? For what it's worth, I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone quite so foolhardy. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you consider your circumstances very carefully. यार सही में यार लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, करो करो यार, इतना मस्त व्यू मिल रहा है, इतना मस्त एचडी में चल रहा है, किया करो यार लाइक और सब्सक्राइब भी। और हाँ, इसके बाद जो बोलने वाला ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है। Charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. Don't you think it's time you stopped digging? I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in status and in strength. I challenge you to a duel before the throne! Proceed. My, you're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too, I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal footing. You are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? Traveler! Then I will deign to share this last dance with you. Till death do us part! What? मौत की A चेतावनी। lesson on harbinger power and elegance? As you wish. Ta 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 ta. Hold on. Vertigus? Eat this! Into the frozen void! Brace you! Oh, so sorry. Disappear! Detestable! Windblade! Dodge this! Into the frozen void! Detestable! Out of the frying pan, into the pot! Time for retribution! You've got some nerve laying your hands on me! Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler! You have reason to be afraid. Windblade! This is not the end. Yep, freeze! Ha! Ha! What's the hurry? Shit, come on, come on. Vertigus? Yeah. Damn you! Ha! Dodge this! Ha!
answers. अब इससे लगा खतरनाक शर्माहट इसको हराना बहुत मुश्किल है यार, यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वाली मेरी। Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Embrace your searing reckoning. Nice and spicy. There can be no excuse for the pit. Are you serious? Not every wound will heal. Freeze! Frostbite. Who dares call me a witch? Race you! Boba, get Not every wound will heal. आओ अरे और तो इसको हराना चाहिए। All must burn! No! Did I ruin everything? और जाना Embrace your searing reckoning. Embrace इधर जाऊं सब जगह Was ये आग वाली को हराना ही बहुत मुश्किल है। इसको किसी भी तरह हरा दूं बोल के मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत सारे दिनों से, मगर नहीं हो रहा। इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं हाथ में रहूंगा और वो हमेशा बिजली के कुछ तो उधार लेना ही पड़ेगा। बस वो नोट अरे से मेरे को पड़ेगा तो उसमें इतना ज्यादा क्या है इसमें। ये 6 पड़े हुए हैं और ये 2। स्टार्टिंग वाले को शैंगलिंग के अलावा मुझे दूसरा कोई कैरेक्टर को अपग्रेड इस तरह करना पड़ेगा जो तबाही में करे शैंगलिंग के अलावा। मुझे शायद इसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके। और ये अपग्रेड होके 50 पे आके बैठ गई ना तो इसके बगल में आ जाएगी, फिर उसके बाद इसे 60-70 तक तो आराम से ले सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी आज का स्ट्रीम इधर ही खत्म कर देते हैं शायद, क्योंकि यार बहुत भूख लग रही है। वैसे खाना कुछ नहीं ज्यादा तो ठीक है।
तो ये था आज का स्ट्रीम। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देख लिया कि भाई यहाँ बहुत मुसीबत है भाई, उसको हराना इम्पॉसिबल है। इसको किसी भी तरह 90 तक पहुंचाना पड़ेगा, ये ट्रैवलर कैरेक्टर को। और ब्यूलू को भी 80 तक पहुंचाना पड़ेगा, इनको भी 80 तक पहुंचाना पड़ेगा। शाइनलिंग को थोड़ा रुक जाते हैं कुछ दिनों के लिए, 70 तक 70 तक ठीक है। और मुझे सबसे ज्यादा इसे अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये पानी है। मतलब कि हर एक क्या बोलते हैं, हर एक तरीके का, जैसे कि ये बिजली नहीं, इसको हवा बना देता हूँ पहले की तरह। और आग, हवा, आग और बर्फ, और ये पानी। तो इन चारों को लेके मैं अटैक करूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और हाँ, ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा ये बनाने में, क्योंकि मेरा बीजीएमआई का भी पर्पल था, कैरेक्टर का वो सूट वगैरह, तो मुझे पसंद आया, बैकग्राउंड वगैरह। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।